Hello students, hello, welcome to Krishnas Maths. बहुत रिक्वेस्ट आसला कि सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा तो खोजी खोजी आपन भाई बहुत गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आछि राइट सब एक मार्क रो बिट क्वेश्चन वाले आपन लागो फील सेमती आसीबो आ ए टाइप रो हमें चेष्टा करबा बहुत प्रैक्टिस करबा आज अराउंड 50 एमसीक्यूज नहीं आछि आपन भाई काली के आउथरे 50 एमसीक्यूज नहीं आसीबो ठीक আছে तो टिके परिश्रम करबा पड़ियो आ काहे ना 50 एमसीक्यूज आसीबो आपन हां तो एग्जाम टा एकदम आम कही पारिबा जे तार 50% टा जो वेटेज रा एग्जाम रो 50% वेटेज रा दैट डिपेंड्स ऑन योर एमसीक्यूज हां तो जते बेले एमसीक्यू भलो होबो एग्जाम रो 50% भलो हिजो तापर 3 और 5 मार्क क्वेश्चन हमें केते डिस्कशन करिया परे तो आज और काली हां दुई दिन हमें सिर्फ एमसीक्यू डिस्कशन करिया आ मोर प्लेलिस्ट को जाई देखिबे ओडिसा बोर्ड प्लेलिस्ट रे 2021 जोटा रिसेंट 2020 2019 एंड बहुत गुड प्रीवियस ईयर कलेक्शन गोटे अच्छी सिर्फ एमसीक्यू सीरीज गोटे अच्छी ओनली एमसीक्यू सीरीज एमती अराउंड 5 मु एमसीक्यू रो वीडियो अपलोड करछि सब जा जाई देखि परिबा आपण प्लेलिस्ट टू जिवे ओडिशा बोर्ड रो प्लेलिस्ट CHSE या ओडिशा बोर्ड रो प्लेलिस्ट टू जाई आपण गोटे गोटे देखि परिबे आ ई चैप्टर रो एंड फ्रॉम ई चैप्टर मु कोन कर आपण मन चारटी वीडियो बनै छै हां माने डिटरमिनेंट्स कहबे सेधर चारटी वीडियो अछि मैट्रिसेस कहबे चारटी वीडियो अछि देन कोई भी हां डेरिवेटिव कहबे चारटी वीडियो अछि इंटीग्रेशन इंडेफिनाइट कहबे चारटी अछि डेफिनाइट कहबे चारटी अछि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहबे चारटी अछि डिफरेंशियल इक्वेशन कहबे चारटी अछि वेक्टर्स कहबे चारटी अछि 3D कहबे चारटी अछि ओके so from each and every chapter I have made around 4 videos and each video contains 3 MCQs, 1 3 mark question and 1 4 mark question, 1 5 mark question. एमती सब वीडियो अच्छे आपण प्लेलिस्ट को जिवे सब मिले आपण देख पारिबे टिके कष्ट करी खोजिबे खोजिके देखिबे कृष्णास में आसी को जिवे तार प्लेलिस्ट को जिवे प्लेलिस्ट ओडिशा बोर्ड को सर्च कर दे सेतिर बहुत गुडे बोर्ड रो अछि सीबीएसई भी करछि एंड महाराष्ट्र बोर्ड रो भी करछि आईसीएसई भी करछि महाराष्ट्र बोर्ड रो एंट्रेंस भी करछि ओडिशा जेई रो मध्ये वीडियो पकेबी अपलोड होबा ओडिशा जेई रो टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड होबो तापर 50 क्वेश्चंस रो 10टा वीडियो अपलोड होबो तो ओडिशा जेई पूर्व मध्ये आपण सेउडा देख पारियो आ ता पई जदी मो चैनल रे नुआ अछंती दुटी काम करिवे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स व्हिच आर कमिंग इन माय चैनल दैट इज कृष्णास मैथ्स सो अभी लेट नहीं करेंगे लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन स्टार ऑन 0 to 6 स्टार ऑन 0 to 6 तो जोटा डिफाइंड अच्छे से होचे स्टार ऑपरेशन इज स्टार ऑन 0 to 6 एंड डिफाइंड एज a star b इक्वल टू a star b मतलब a plus b mod 7 a plus b mod 7 कौन रिटर्न करिवो ऑलवेज द रिमाइंडर माने a star b अर्थ a plus b mod 7 मतलब a plus b when divided by 7 जो रिमाइंडर आपन प्रोवाइड करिवो a plus b divide by 7 तो जो भी रिमाइंडर आसो a सेटर रहिवो कि इज ए बाइनरी ऑपरेशन यस और नो तो दुईटी एलिमेंट देखबे मनकर मुनेली 1 and 6 तो a plus b केता हिला 1 plus 6 हेगला 7 को जेतबे 7 रे डिवाइड करे रिमाइंडर 0 बिलोंग्स टू द सेट जदि मुनेली 0 और 1 जदि मुनेली 0 और 1 0 plus 1 is 1 को जदि 7 रे डिवाइड करिवे 7 into 0 plus 1 so the remainder is 1 belongs to the set 0 out 2 नेली so the sum is 2 divide by 7 so the remainder is 2 एमते सब रे आसीबो है ना जदि मु 5 और 6 नेली 5 plus 6 is equal to 11 divide by 7 the remainder will be 4 belongs to the set एमते सब आसीबो so the answer is yes is a binary operation then find the value of tan inverse 2 plus tan inverse 3 options एमते हे पारे pi 0 pi by 4 and pi by 3 एमते किछ हे पारे tan inverse x plus tan inverse y रो फार्मूला लिखबे tan inverse of x plus y divide by 1 minus x into y tan inverse of x plus y divide by 1 minus x into देखो x होची ग्रेटर देन 0 y होची ग्रेटर देन 0 x into y
is greater than 1. X into y माने देखो x रो वैल्यू 2 और y रो वैल्यू 3. Since x into y is greater than 1, आंसर कौन आसबो पाई प्लस केते आसबो पाई प्लस. So पाई प्लस एटी केते गेला. This will be tan inverse of 2 plus 3 is 5. 1 minus 6 is minus 5. 2 plus 3 5 गेला. 1 minus 6 गेला minus 5. So this is equal to pi plus tan inverse of minus 1. So this is equal to pi plus tan inverse of minus 1. Minus sign बाहर को आसजियो. Tan inverse of 1. Tan inverse 1 केते होची pi by 4 ना. केमति लिखबे tan inverse of 1 can be written as 10 pi by 4. So tan inverse of 10 pi by 4 will be pi by 4. So pi minus pi by 4 and which will give you 3 pi by 4. So 3 pi by 4 एमती ऑप्शन थी. एटी के ध्यान रखिए दुईटी फॉर्मूला अछि. हाउ मेनी फॉर्मूलास आर देयर? 2 फॉर्मूलास आर देयर. प्रथम फॉर्मूला कोन देखो. This is tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy, provided x greater than 0, y greater than 0, x into y less than 1. अब जो x into y greater than 1 हेगला, if x into y is greater than 1, so this will be pi plus tan inverse. जो फॉर्मूला मु एठी लिखछि pi plus tan inverse. बुझियला. तो फर्स्ट आंसर होची yes, second answer होची 3 pi by 4. Let's move to the next question. This is the determinant. एटा होची determinant. 0 x minus a x minus b this then find the या determinator जदि value 0 अछि find the value of x. Find the value of x. एटा को सॉल्व करियो जिबे पूरा जो एक्सपांड कर दियो फसी जियो क्वेश्चन भीतर. कोन देछि देखो डायगोनल एलिमेंट 0 अछि. डायगोनल एलिमेंट सब 0 अछि. को मैट्रिक्स रो डायगोनल एलिमेंट 0 रहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो फॉर्मेट कोन होछि डायगोनल सब 0 होबो. आ जदि एठी a हला if this is a this has to be minus a ऊपर प्लस है. आ जदि एठी b हला तो this will be minus b और एठी c हला this will be minus. एमती गोटे पैटर्न रो होछि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आ जदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अछि आ तार ऑर्डर अछि ऑड नंबर हां देन डिटरमिनेटर वैल्यू होबो 0. डिटरमिनेंट वैल्यू कोन होबो 0. अब देखो ए डिटरमिनेंट ऑलरेडी 0 अछि. ऑर्डर ऑड नंबर अछि ऑलरेडी. ऑर्डर कोन 3 क्रॉस 3 ना. तो ऑर्डर इज ऑलरेडी ए ऑड नंबर. डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0. डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. therefore the matrix must be skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix माने ए दुटा same, ए दुटा element same by magnitude but opposite in sign. These two are also same in value but opposite in sign. तो एक केस रे अपन कोन करिवे एटा को skew symmetric बनेबे. So for what value of x the determinant is a skew symmetric matrix when x is equal to 0. जेतले x को हम 0 करन भाबी देखन जेतले 0 करिवे ये 0 ये माइनस है this is minus b, this is a, this is 0, this is minus c, this is b, this is c, this is 0. So by pure inspection you can see that when I substitute x equal to 0 जेतले मु x के जगह रे 0 सब्स्टिट्यूट करछि मोर जो डिटरमिनेंट आउछि से डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक वाला देखा जाउछि. therefore the answer will be always equal to 0. तो ऑप्शन रे कोन थिबो आंसर 0 1 2 3 -1 थिबो. so what will be the correct answer? The correct answer is 0. Make a matrix skew symmetric. Since it is already of odd number, its value will be always equal to 0. Now come to the next question. What the next question is? The next question says a equal to 0 is singular. Since a is singular, determinant a will be always equal to 0. So determinant is 1 0 2 5 1 x 1 1 1 and this the matrix will be equal to 0. Solve कर दे. 1 into 1 minus x plus 2 0 तो एक्सपेंड करे दरकार नहीं plus 2 into 5 minus 1 5 minus determinant को solve कर दे equal to 0. So this is 1 minus x 5 minus 1 will be 4 4 into 2 will be 8 equal to 0. So x is equal to 9. check कर दो. 1 into 1 minus x 1 into 1 minus x plus 2 into 5 minus 1 5 minus 1 will be 4 4 into 2 is 8 and plus 1 is 9. So x is equal to 9. Absolutely correct. Next, move to the next question. Write the derivative of sec inverse x. Look, the formula is d by dx of sec inverse x. What is the derivative? Equal to 1 by x into square root of x square minus 1. This is the formula. This is the required formula. So dy by dx is equal to
dy by dx equal to 1 by x into x is root e raised to x plus 1 x into square root of e raised to x plus 1 the whole square minus 1. So this is the answer. Option रो देखिए जो expand करिए देखिए expand करिए otherwise एमती छाड़ दो. This is the answer. खाली formula बन रहा है. Write the set of points where the function f of x has relative or local minima or local maxima. Extrema मतलब minima और maxima. ठीक है जी. y equal to x cube ग्राफ देखो. y equal to x cube is an odd function ग्राफ एमती अछि. तो ए जो पॉइंट अछि ए जो पॉइंट अछि ए पॉइंटर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम काइना डबल डेरिवेटिव कोन कहउछि कर्व तार कनकेविटी चेंज करछि कर्व कोन कहउछि तार कनकेविटी चेंज करछि. तो ए पॉइंट डबल डेरिवेटिव 0 देखो जदि मु f डैश x करबी f डैश x इज 0 f डबल डैश x इज आल्सो इक्वल टू 0. हां f डबल डैश x इज आल्सो इक्वल टू 0 माने जोठी तार फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होछि सेट तार सेकंड डेरिवेटिव मध्ये 0 होछि मतलब neither maximum nor maximum. Set of points, how many set of points are there? No such points exist. No such points exist. एमती कौन सी पॉइंट ना जो ये तार लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम को अटेन करी. ठीक है. नेक्स्ट 0 to pi sin raised to 8x dx रिडक्शन फॉर्मूला रे करते 0 to pi अछि 2 को बाहर नै जी. सो दिस विल बी 0 to pi by 2 and this will be sin raised to 8 theta into d theta. So this is 2 into formula कौन करिवे m minus 1 upon m 8 minus 1 by 8 into 8 minus 3 by 8 minus 2 that is 6 into 8 minus 5 by 4 into 8 minus 7 by 4 minus 2 is 2 1 by 2 मिलगला जेमती 1 by 2 मिलगला सिर्फ जोटे pi by 2 रे मल्टीप्लाई कर दो. So this is 2 into here it is 7 by 8 8 minus 3 will be equal to 5 by 6 8 minus 5 is equal to 3 by 4 and this is 1 by 2 and this is 5 by 2 multiply कर दो आंसर आसी. ठीक है. 2 into 3 becomes 6 7 5 is 35 pi divide by 4 4 4 is 16 16 into 8 16 into 8 will be 128 and this is your answer. formula जो रेफरेंस पे दरकार होची मु लिख दोछ. देखो फॉर्मूला कौन होची इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin raised to mx or cos raised to mx either sin or cos and the formula is valid for both sin as well as cos. जदि sin function अछि पावर जदि इवन अछि ऑड अछि लिमिट 0 to pi by 2 लिमिट 0 to pi by 2 जदि 0 to pi by 2 नथियो तब 0 to pi by 2 बनेबो. जेंति हम कोन कले 0 to pi थिला pi को 2 को बाहर कले 0 to pi by 2 एमति बनेबा अपना 0 to pi by 2 बनला परे फॉर्मूला होचे m minus 1 upon m ऊपर 2 अलगा माइनस करिवे डिनोमिनेटर 2 माइनस करिवे एमती चलिवे till 1 by 2 जेमती 1 by 2 मिलला सेंती pi by 2 रे मल्टीप्लाई कर दो. if m is even or m minus 1 by m into m minus 3 by m minus 2 till 2 by 3 if m is odd 8 ही कौन करिवे 1 by 2 रे मल्टीप्लाई करिए. ठीक है. द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ डिग्री डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोड अछि 8 अछि पावर केते अछि 1 डिग्री ऑर्डर केते 1 एंड डिग्री केते 1 तो ऑर्डर इक्वल टू 1 एंड डिग्री इक्वल टू 1. ठीक अछि. चल द वर्क डन बाय द फोर्स दिस f bar is given while displacing a particle from a to b. तो फोर्स वर्क डन होछि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट f bar dot ds bar. Here the displacement is your ab bar equal to b bar minus a bar. बॉडी टा कोन करछि a रु b को डिस्प्लेस करछि तो ab bar हे गला तोर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. b bar minus तो 2 minus 1 is I cap minus 1 minus 2 is minus j cap 3 minus 0 will be 3 into k cap. Force will be this is force and this is displacement. Now dot product needs where I ro coefficient 4 I ro coefficient 1 so 4 into 1 0 coefficient 2 0 coefficient minus 1 k ro coefficient 3 k ro coefficient 3 so 4 into 1 will be 4 minus 2 3 into 3 will be 9 9 plus 4 is 13 13 minus 2 will be equal to 11 and this is your answer. Next find the vector equation of the line joining the point. दुईटा point को join कर equation कौन होता है x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to this is the formula. Okay y minus y1 divided by y2 minus y1
and equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. This is the formula to get the equation of the line when the line passing through any 2 points. So this is x minus 2 divided by 4 minus 2 will be 2 equal to y minus 1 divided by minus 2 minus 1 is minus 3 equal to z minus 3 divided by 5 minus 3 will be 2, and here this is your answer. This is the formula to find the equation of the line passing through 2 points. Cartesian form. If vector form में करिए कौन हो, first vector is a bar and the second vector is b bar. So a bar plus lambda into b bar minus a bar, if it is given in vector form. So next question. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point. Look, this is the plane. ये plane. Foot of the perpendicular drawn from origin. Origin to हमें perpendicular drop कर ले. Let this point is your alpha, beta, gamma, perpendicular. This is origin 0, 0, 0. Okay. Let this point is your P. So direction ratios of OP bar, DRS of OP bar is equal to alpha, beta, gamma. देखो इक्वेशन एंटी होता है ना 1 into x 1 into y 1 into z. तो जो नॉर्मल है नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो के DRS of normal are 1, 1, 1, and since OP bar parallel to normal, therefore alpha by 1 is equal to beta by 1 is also equal to gamma by 1. So therefore alpha equal to beta is equal to gamma, and since P lies on the plane, alpha beta gamma equal है और जो P वाला पॉइंट प्लेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करियो तो x जगह कौन लिखिए अल्फा, y जगह कौन लिखिए बीटा, 8 सेटिस्फाई करियो ना, z जगह कौन लिखिए गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड सिंस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू गामा, सब बीटा को अल्फा लिख देवे, गामा को मध्य अल्फा लिख देवे, अल्फा प्लस अल्फा बिकॉज ऑफ दिस minus 1 equal to 0. So 3 alpha equal to 1 and alpha is equal to 1 upon 3. तो point कहते हैं point है 1 upon 3, beta also equal to alpha 1 upon 3, gamma also equal to 1 upon 3. So this is the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular. Chalo, next write the projection. Let this will be a bar and this will be b bar. Projection of a bar on b bar. What the formula is? Projection of a bar on b bar is a bar dot b bar divided by magnitude of b bar. First find the dot product. Aero coefficient 1, aero coefficient 1, 0 coefficient minus 1 into minus 1. This is a dot b divided by magnitude of b bar. 1 row coefficient 1 plus minus 1 row square. This is the formula. The numerator is 1 plus 1, 2 divided by 1 plus 1 is root 2. So 2 upon root 2 and that is equal to root 2. This is the answer. Projection is the length, perpendicular length. But you have let f of x equal to 2 log x. देखो f of x क्या given है? F of x is given as 2 into ln x. And what about g of x? G of x is given as ln x square. देखो लागू ची दुईटा जा सेम फंक्शन किंतु अलग फंक्शन. 8 log x रो डोमेन अब 8 log x square रो डोमेन दुईटा जा अलग अलग. Since domain of f is not equal to domain of g, f रो domain और g रो domain equal नहीं हो, therefore f is not equal to g. So f is not equal to g. Yes or no रे question पचारियो. Yes, no, we cannot say none of these. So f is not equal to g. Two functions are said to be equal when their domains are equal. Next, cot inverse x can be converted as tan inverse of 1 by x plus sine inverse of 1 by root 5 is equal to pi by 4. Pi by 4 means tan inverse of 1. Tan inverse of 1 is equal to pi by 4. So tan inverse of 1 minus tan inverse of x equal to sine inverse of 1 by root 5. So left hand side tan inverse is tan inverse of 1 minus x divided by 1 plus 1 into x, and this is equal to sine inverse of tan रे convert कर देवे. केमती करबे ट्रायंगल बनेगी ना, इट थीटा कर देवे. sin थीटा है गला 1 upon root 5. root 5 रो स्क्वायर है गला 5, 1 रो स्क्वायर है गला 1. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो. 4 रो रूट है गला 2. ठीक है. तो tan इनवर्स कहते हैं गला tan इनवर्स ऑफ जो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये है गला 1/2.
tan inverse दुई साइड रो कैंसिल होगला. So we can have 1 minus x plus 1 plus x is equal to 1 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देबे. 2 minus 2x is equal to 1 plus x. 2x को सही पटे नहीं जीवे तो 1 को ये पटे आने देबे. 2 minus 1 is 1. x plus 2x will be 3x. Therefore x is equal to 1 upon 3. So this is your answer. बुझियो ना. आगे कौन कले हमें cot इनवर्स को tan रे कन्वर्ट कर देले, sin इनवर्स को tan रे कर देले, राइट हैंड साइड पाई बाय 4 को tan इनवर्स 1 लिख देला और सॉल्व कर दे. राइट. लेट्स मूव. a is given, I is given, then a minus alpha I, a minus alpha I equal to h 2 4 1 13. This is a minus alpha into I, that is 1 0 0 1. So this is equal to 2 4 1 13 minus alpha multiply करिए alpha 0 0 alpha. जितने multiply करिए 2 minus alpha, 4 minus 0, 1 minus 0, 13 minus alpha. So this is the answer. Evaluate this. Determinant को expand करते हैं. Minus 6 into कहते हैं 11 5 जा minus 55, 8 7 जा 56. बस बाकी दूटा जीरो अच्छे एक्सपांड करिए दरकार नहीं. तो minus 6 into minus 6 plus 5 is 11 and this is 1 1. 5 plus 5 10, 10 plus 1 is 11. Minus minus is plus 666. This is the answer. Given example of a function whose first derivative is not differentiable at x equal to 2. यार जो first derivative हबो सेटा differentiable हबने. Let f of x is equal to mod of x minus 2 which is not differentiable at x equal to 2. But या कथा पता नहीं यार first derivative तो आगुट x minus 2 रे multiply कर दियो. जतले first derivative नेबे f dash x नेबे u into v करियो ना. तो यार as it is रखियो यार derivative करियो plus या को as it is रखियो यार डेरिवेटिव जतले यार डेरिवेटिव कर देबा नहीं तो ये फंक्शन टा डिफरेंशिएबल नो एट x इक्वल टू 2 सिंस mod x is not differentiable at x equal to 2 therefore mod of x minus 2 is also not differentiable. ठीक है. now is there any tangent to the curve f of x at 1 by 2 comma 0. so देखो f of x is equal to mod of 2x minus 1. so the mod of 2x minus 1 is 0 when x is equal to 1 by 2. 1 by 2 रे 0 होला. 1 by 2 रो राइट साइड को पॉजिटिव हेगला, 1 by 2 रो लेफ्ट साइड को नेगेटिव होला. ना 1 by 2 रो 0 भितरे 1 by 2 आइए 0. तो between 1 by 2 and 0 is there any tangent to the curve exist? No, there will not be any tangent to the curve. ये कर्व को टच करी के जीवो नहीं. so no tangent exists. Next the primitive माने इंटीग्रेशन. primitive माने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो. x by x into root of x square minus 1 minus 1 by x into root of x square minus 1. First is the formula. x cancel होगा. 1 by root of x square minus a square is log of mod of x plus root of x square minus 1. ये वाला first minus this will be your sec inverse of x. Sec inverse derivative formula देखो डायरेक्ट कर दो. Is y equal to a by x plus a is a solution of the differential equation. Y equal to a by x plus a is this a solution? कौन करिए चेक करिए सॉल्यूशन अच्छी कि नहीं. log नहीं की करो. log y is equal to log a minus log of x plus a. differential करो तो 1 by y into dy by dx equal to log a constant derivative 0. log of x plus a will be 1 upon x plus a. So dy by dx is equal to y into 1 upon x plus a and that's a minus sign. Minus y upon x plus a. So this is dy by dx. So x into dy by dx multiply कर दो अब plus y equal to y square है ना. तो आसियो लागू छ x into dy by dx x रे multiply कर दो x into dy by dx. So x into dy by dx equal to minus xy divided by x plus a. So this is x into dy by dx plus xy upon x plus a equal to y square. कौन है y square. So this is x into dy by dx plus x by x plus a
इंटू वाई हाँ तो ए रे मल्टीप्लाई कर दो ए रे डिवाइड कर दो तो आसी होची यस आंसर इज यस ये गोटे मेथड अच्छी दुईटा मेथड सेकंड मेथड एटा को सॉल्व कर दे बाय यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटा कि लंबा ही दियो पी क्यू करबा पड़ियो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर करबा पड़ियो दैट विल बी लिटिल ग्रेटर तो एटा को सॉल्व कर दो एटा को सॉल्व कर दो ऐसे नो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी कर परियो एक डायरेक्ट डिफरेंशिएट किंतु u by v रूल करबा सेट में लॉग नहीं कर दो जल्दी ओके then the relation r on the set of real numbers desired x related to y is x minus y plus root 2 is irrational is r is transitive r transitive होबो की केमति करिवे अगर x related to y तो डेफिनेशन है गला x minus y plus root 2 this is irrational if y related to z then this will be y minus z plus root 2 is irrational this is also irrational therefore दुटा देखो ऐड कर दे माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस रूट टू इज ऑल्सो इरेशनल मतलब एक्स कॉमा एक्स रिलेटेड टू जेड देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव तो यस आंसर इज यस फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन रो मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू माने कौन मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स ऑफ तो n by pi केते गला n by pi इक्वल टू tan इनवर्स एई पटे गला 10 pi by 4 which is equal to 1 है ना ए वैल्यूटा 1 रु बड़ हेबार अछि 1 रु बड़ हेबार अछि तो न्यूमरेटर वैल्यूटा pi रु बड़ हेबार अछि व्हाट इज pi इज 3.14 माने 3.1 रु बड़ हेबार अछि और n हेबार अछि n माने इंटीजर हेबार अछि सॉरी नेचुरल नंबर हेबार अछि सो व्हाट इज द नेचुरल नंबर द लीस्ट नेचुरल नंबर व्हिच इज मोर देन 3.14 दैट इज 4 तो n इक्वल टू 4 बुझियला कौन कहली आउ थरे कह दोछ देखो tan इनवर्स ऑफ n अपॉन pi इज ग्रेटर देन pi by 4 tan टा इनवर्स टा को सेही पटे नै थियो तो n by pi इज ग्रेटर देन 10 pi by 4 10 pi by 4 इज 1 1045 1 हेगला सो n इज ग्रेटर देन pi n is greater than pi टा को एपटे मल्टीप्लाई कर दे n will be greater than pi and so n greater than what is pi 3.14 so which is the least integer सबुठु छोटो इंटीजर जोटा कि 3.5 रु बड़ 3.14 रु बड़ so 3.14 रु बड़ least positive integer will be 4 n is equal to 4 एबे कहि सर 5 भी तो बड़ 6 भी तो बड़ 7 भी सबुठु छोटो बड़ नंबर the least value of n minimum value of n will be 4 next a is given k square equal to k into a so a square माने 1 minus 1 minus 1 1 this is a into a 1 minus 1 minus 1 1 a square equal to k into 1 minus 1 minus 1 and 1 multiply कर दे 1 plus 1 is 2 minus 1 will be minus 2 minus 1 minus 2 1 plus 1 will be 2 and this is equal to k minus k and k so k is equal to 2 k will be equal to 2 so this is the final answer now is equal to this then write the value of a देखो एटा को जेतले सॉल्व करिवे ये जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करिवे डिटरमिनेंट कोन अछि देखो 1 plus x square this is also x here is 1 plus x this is x square x 1 plus x so the value of the determinant is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube plus cx raised to 4 ex raised to 4 plus fx raised to 5 this is given now you need to find the value of x for which you need to find that value of x which will provide a रो value हमु आनिबार अछि तो x रो को वैल्यू पुट कले हमु सिर्फ a मिलियो देखो when I use x is equal to 0 जब x को 0 करिवे सब 0 हो जो सब जगह x अछि सब 0 हो तो right hand side will be only a and left hand side जो जोटी x अछि 0 कर दे 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 हेगला this is equal to आपको सॉल्व करले 1 into 1 minus 0 so this is equal to a तो a is equal to 1 अब कितना सिंपल हेगला क्वेश्चन देखियो कटे टफ लागतला है ना ए डिटरमिनेंट केबे भी ए डिटरमिनेंट को एक्सपांड करिवे ता सहित कंपेयर करिवे कांस्टेंट टर्म को एमती किछ भाबियोनी राइट साइड तो सिर्फ a दरकार ओनली यूनिट a तो व्हाट वैल्यू ऑफ x will provide you a only
तो x रो को वैल्यू टा सब्स्टिट्यूट कले हमको राइट हैंड साइड पूरा आंसर टा a मिलियो सेटा देखियो एंड दैट वैल्यू इज x इक्वल टू 0 सो पुट x इक्वल टू 0 दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप हां वेरी 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 इंपोर्टेंट स्टेप x को 0 कर दिला हमको आंसर आसे ठीक अछि चल आगु जिबा alpha x belongs to 3 pi by 4 comma pi what is dy by dx for mod cos x plus mod sin x देखो 3 pi by 4 to pi 3 pi by 4 to pi माने 135 डिग्री टू 3 pi by 4 माने केते अछि एटा 90 एटा pi 3 pi by 4 माने 8 135 90 plus 45 तो 8 to 80 भीतर अछि 8 to 80 भीतर माने को क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट cos कोन होछि नेगेटिव cos कोन होछि negative so cos will become minus cos sin kon hochi positive sin will become cos x now dy by dx equal to minus of cos x ro derivative minus sin x so plus sin x and derivative of sin x will be equal to cos x so this is the answer give an example of a function next question this is one question this is one more question give an example of a function which is increasing in minus infinity to 2 and 3 to infinity and decreasing in 2 to 3 तो देखो एठू जना पड़छ जो क्रिटिकल वैल्यू तमर हबो जो नंबर लाइन में बनेबा क्रिटिकल वैल्यू नंबर दुईटी वैल्यू देखा जाउछ 3 and 2 नाउ व्हाट द साइन स्कीम मेथड सेज कि जो बॉर्डर नंबर ता अछि सेठी 2 रो प्लस रहयो तापर जेतळे हम राइट टू लेफ्ट टू एम्ति चली चली आसबा गोटे रूट जेतळे क्रॉस होतो व्हेन यू क्रॉस वन ऑफ द रूट द साइन विल चेंज तो आफ्टर 3 इट इज पॉजिटिव बिफोर 2 इट इज पॉजिटिव बिटवीन 2 and 3 इट इज नेगेटिव माने 80 increasing 80 increasing in this interval it is decreasing this is given give an example of a function so function रे 3 is one of the root and the other root is 2 तो एमती गोटे फंक्शन लिख दियो 2 गोटे रूट है x minus 2 is one of the factor 3 root है x minus 3 is one of the factor so x minus 2 into x minus 3 this is an example where the function is increasing from minus infinity to 2 and 3 to infinity and decreasing between 0 to 2 now minus 1 या को सॉल्व कर दे -1 to 0 प्लस हेगला 0 to 1 तो बिटवीन -1 to 0 e raised to mod x becomes negative x and this becomes positive x तो e raised to minus x is e raised to minus x into -1 between -1 to 0 plus e raised to x 0 to 1 so minus of e raised to 0 is 0 minus e raised to minus of -1 will be plus 1 that is e then minus e raised to 1 is e raised to 0 is 1 okay e raised to minus 0 is 1 e raised to minus 1 so minus of minus 1 will become plus 1 so this is equal to ऊपर लिख दो हाँ this is equal to minus of minus e plus 1 so 2e minus 2e plus 1 and बाहर minus अच्छी so 2e minus 1 so this is the answer mod x टा कोन होछि जेतलो x रो वैल्यू 0 टू अधिक हाबो when the x is more than 0 it is positive and when the x is less than 0 it is negative then write the solution of this the solution of cube root of 4 plus cube root को cube कर दो तो 4 plus dy by dx 4 plus dy by dx equal to 2 cube which is 8 so dy by dx is equal to 8 minus 4 will be 4 so dy is equal to 4 into dx now integrate when you integrate you will get y is equal to what you will get y is equal to 4 into x plus some constant so y equal to mx plus a. This is the equation of a straight line write the equation of the line passing through the points this and this again एमती गोटे सम टाइम सॉल्व करथिले one of the problem we have solved x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1 or r bar is equal to this is for vector form a bar plus lambda into b bar minus a bar so this is vector form and this is your Cartesian form CF is for Cartesian form and VF is for vector form now let us write in Cartesian form x minus 3 by 3 minus 3 will be 0 equal to y minus of minus 2 will be plus 2 minus 2 plus 2 will be 0 equal to z minus of minus 5 plus 5 6 plus 5 will be 11 and this is the answer find the volume of the parallel pipette where this is a bar this is
B bar, and this is C bar. What is the formula for volume of the parallel pipette? Volume of the parallel pipette equal to scalar triple product of A bar, B bar and C bar, and that can be calculated. It can be find using a determinant. प्रथम वेक्टर देखो 2i minus 3j, 2 minus 3 and 0, 1 1 and minus 1, 3 0 and minus 1. Simplify करो. 2 into minus 1 minus 0, minus of minus 3 will be plus 3, minus 1 plus 3 and plus 0. So this is minus 3 plus 6, which is equal to 3 cubic units, since it is volume. Cubic units. Let's move to the next question. R is defined, restrict the codomain to make R subjective. Codomain को restrict करिए, R को subjective करिए अच्छे तो F will be from R to N. Subjective माने जदि y रे जदि b रे को गोटे वैल्यू अच्छी तार करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू अच्छे से a रे रहबो है ना. f of x will be equal to y ना. So for all values of y there must exist a value of x in a. ठीक अछि. तो जदि नेचुरल नंबर नहीं जे mod of natural number will be always positive, तार कोना को इमेज हमर सेठी रहबो. ठीक अछि. So this is one question. Restrict कर देले डोमेन को. What is the value of cos of tan inverse of cot of cos inverse of root 3 by 2. So this is cos inverse of root 3 by 2 माने cos pi by 6, 30 डिग्री ना. तो एटा कैंसिल हो गला, हमको आसला 30 डिग्री. तो क्वेश्चन कौन बढ़ला? क्वेश्चन रिमेन्स cos of tan inverse of cot of pi by 6. Now cot pi by 6 will be equal to root 3. Cot 30 is root 3. So tan inverse of root 3 into cos inverse of something. Now cos of tan inverse of root 3 ना, root 3 माने 60 डिग्री होती है ना, 60 डिग्री माने pi by 2, sorry pi by 3. So this is cos of pi by 3, मतलब cos 60, and cos 60 equal to 1 by 2. This is your answer. Let's move to the next question. Construct a 2 cross 3 matrix having elements given by aij equal to I into j. So what a 2 cross 2 matrix is? 2 cross 2 matrix is a11, a12, a13, then a21, a22 and a23. हेगला मैट्रिक्स. अब यार एलिमेंट जो अच्छे I into j, every ij, every aij will be represented as I into j. So this is I कितना? I1 है j1. I कहते हैं 1 और j1. 1 into 1 is 1. 1 into 2 will be 2. 1 into 3 will be 3. 2 into 1 will be 2. 2 into 2 will be 4. 2 into 3 will be 6. And this is the matrix. If this into this is equal to this, write the values of x and y. Multiply कर दिया. 3 into 5 will be 15. 2 into 7 will be minus 40. First row first column मिला. 3 into minus 2 will be minus 6. 2 into y will be equal to 2y. Second row first column 7 5 are 35. Minus 7 into x will be 7x. Then 7 into 2 will be minus 14. Plus x into y will be xy. And this is equal to 1 0 0 1. This is equal to 1 0 0 1. So look, 15 minus 14 is 1. Minus 6 plus 2y. 35 minus 7x and minus 14 plus xy. And this is equal to 1 0 0 1. So minus 6 plus 2y equal to 0 corresponding. So 2y will be equal to 6. So y is equal to 3. Y मिल गया. So this is minus 14 plus xy, and this will be equal to 1. So x into y will be equal to 15. Y 3 na. So x into 3 will be equal to 15. Therefore x is equal to 15 by 3. 15 by 3 will be equal to 5. So x is 5 and y is 3. Okay. चलो आगू बढ़िया. X is equal to 80 square and y equal to 280. Parametric equations. So first get dy by dt. Dy by dt equal to a into derivative of t square is 2t. And dx by dt next. Dx by dt equal to 2a constant. Derivative of t will be 1. Now dy by dt equal dy by dx is equal to 2at divided by 2a is equal to t. Now d by dx of dy by dx
is equal to d by dx of t. So this is equal to d by dt of t, chain rule, into dt by dx. And this is a function of t that cannot be differentiated with respect to t, but can be differentiated with respect to, cannot be differentiated with respect to t, but can be with respect to x. So dt with respect to dt multiply dt. So this is 1. Derivative of t with respect to t will be 1 multiplied by dt by dx, which is the reciprocal of dx by dt, which is 1 upon 2a. So 1 divided by 2. So at x equal to 1 by 2. X to 9, 1 by 2 है answer. The interval f of x equal to log x divided by log 5 decreasing if any. So look, f of x is equal to, this is log x divided by log 5. Now what about f dash x? F dash x equal to log x, derivative of log x is 1 by x into 1 by log 5. This should be less than 0. So 1 by x less than 0. Therefore 1 by x is less than, since log 5 is positive, 0 to multiply hegala 0. 1 by x less than 0 means x is greater than 0. X greater than 0 for all positive numbers. For all positive numbers. Sub positive number by function कौन होगा? Decreasing होगा, right? Next, write the value of this. Look, this is minus in 1 to 1, sin raised to 5x. It's an odd function. Plus if this is again an odd function. So ये पूरा होगा अपना odd function. कोई function odd function. केमती चेक करिए. F of minus x equal to minus of f of x. ठीक है जी. तो f of minus x equal to sin raised to 5 into minus x minus x. Sin raised to minus माने negative sin raised to 5x minus x. Minus to common निकले plus निकला, and this is equal to minus of f of x. So f of minus x is equal to minus of f of x. या माने f of x is an odd function. When f of x is an odd function, the integration over minus 1 to 1 odd function is always equal to 0. Write the degree of the differential equation. Write the degree of the differential equation. 80. It is a standard question. dy by dx solve कले अपन आसो 1 minus y square divided by 1 minus x square. एमती आसो. ठीक अच्छे. तो इटा कौन है गला 1 divided by root of 1 minus y square into dy equal to 1 divided by 1 minus x square into dx. Solve कर दे. So this is sin inverse of y equal to sin inverse of x plus c. गोटे थोड़ा differentiate करिए. तो dy by dx एमती पड़ा असला. तो what is the degree of the differential equation? इटा order है गला. Order 1 है गला और degree 1 है गला. Order 1 and degree 1. ठीक है जी. Order 1 degree 1. Okay. चल बड़ी आगे. Write the value of y so that the point this and this are collinear. So look, the point A is 1, y 2, point B is 3, 2, minus 1, and the point C is minus 4, 6, and 3. Direction ratios of AB bar. AB bar parallel to BC bar, na man A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. So 3 minus 1 will be 2. This is 2 minus y, minus 1 minus 2 will be minus 3. Then direction ratios of BC bar, minus 4 minus 3 will be minus 7, 6 minus 2 will be 4, and 3 plus 1 will be 4. And collinear, so collinear means A1 by A2, but 2 by minus 7 equal to 2 minus 4 upon 4 equal to minus 3 upon 4. Cross multiply कर दो. 4 into 2 will be 8. 8 को 8 है ना. 7 into 2 minus 14 plus 7 y. 8 plus 14 will be 22 by 7, and that is equal to y. तो जब y रो value 22 upon 7 है ला collinear है. Write the equation of the line passing through point. Point is 1, 2, 3 parallel to the plane. ये plane को parallel. तो plane रो normal को ही गला perpendicular. Plane रो normal कौन है गला? Equation of the plane passing through this. Okay, so this is the point x1, y1, z1. याकू parallel माने यार normal रो direction ratio है गला 1 to 5. So required direction ratios are also 1 to 5. Equation of the plane formula is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1, and this is equal to 0. So a is 1 into x minus 1 plus b is 2 into y minus 2 plus c is 5
into z minus 3 equal to 0. So this is x minus 1 plus 2y minus 4 plus 5z minus 15. This is equal to 0. So this is x plus 2y plus 5z minus 1 minus 4 is minus 15 minus 5 will be minus 20 equal to 0. So this is the equation of the plane. ठीक है, sin inverse of 1 by root 5. sin inverse of 1 by root 5. ये cos inverse of sin से convert करिए. कौन करिए? गोटे triangle बन दो. एटा थीटा कर दो. This is 3. This is root 10, and this is 10 minus 3 square is 9, and root of 10 minus 9 will be equal to 1. So एटा को जो sin inverse करिए, opposite upon hypotenuse तो 1 upon root 10. Now sin inverse x plus sin inverse y. So sin inverse of x into root of 1 minus y square plus y into root of 1 minus x square. So this is equal to sin inverse of x. X माने 1 upon root 5 into square root of 1 minus y square. Y square is 1 by 10 plus 1 by root 10 into square root of 1 minus 1 by 5. So this is equal to sin inverse of 1 by root 5, 10 minus 1, 9 by 10, minus 3 by root 10, plus 1 by root 10, 5 minus 4, 2 by root 5. So this is equal to sin inverse of 3 plus 2 is 5, divided by root 5, root 10 is root 50, and root 50 will be equal to sin inverse of 5 divided by 5 root 2, 5 gets cancelled. So sin inverse of 1 by root 2. 1 by root 2 माने कौन लिखिए? sin inverse of sin pi by 4 is 1 by sin inverse of sin gets cancelled, pi by 4. So this is your answer. Pi by 4 will be your answer. B square equal to this, then B is equal to let B equal to A B C D. Okay. Therefore B square कहते गला B square equal to A B C D multiplied by again A B C D. A into A square plus BC. A into B AB plus BD. This is AC plus DC, and this is BC plus D square. Okay. Normal idea करके लिख. Normally एटा सॉल्व करने के टाइम लग जाएगा ना. Normally देखो 1 2 3 4 नहीं देखो 1 1 4 4 1 चेक करो 1 4 4 1 कहीं ना 17 अच्छी ना 17 माने 16 प्लस 1 ऐसे हो पारे 8 माने 4 प्लस 4 हो पारे तो 1 into 1 है गला 1 प्लस 16 है गला 17 1 into 4 4 plus 4 8 4 plus 4 है गला B is equal to सॉल्व करिया दरकार ठीक है मुंडा खर्च करी लिख दे 2 3 माने कोन है जदी 2 3 लिखबे 2 3 2 3 एंते लिखे या 2 3 6 plus 9 15 हो हमु 17 दो दरकार राइट next question is if A is what is given if A is a 3 cross 3 matrix and the determinant of A is 3 then write the matrix represented by A into adjoint A. Remember this is a formula A into adjoint A is determinant A into I and determinant A is given as 3 and I is a 3 by 3 matrix 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay, 3 रे multiply कर दो 3 रे multiply कर ले diagonal elements will become 3 and the remaining all will become 0. So this is your answer. Next y is equal to 5 raised to t. So dy by dt into dt by dx will give you dy by dx. Derivative of 5 raised to t with respect to t is 5 raised to t into log 5. dt by dx e raised to 3x into derivative of 3x will be 3. And this is when x is equal to 0. When x is equal to 0, t is equal to e raised to 3 into 0. 3 into 0 will be 0. E raised to 0 equal to 1. And when t is equal to 1,
5 raised to 1 into log of 5, 3 raised to e raised to 0 into 3. Okay, so 5 into 3 will be 15, e raised to 0 is 1 into log 5. So this is the answer, 15 log 5. Write the absolute minimum value of x upon mod x and minus 2 to 1. Minimum value. When x is equal to 0, everything becomes 0. When x is equal to minus 1, when x is equal to minus 1, mod of minus 1 will become plus 1. Mod of minus 1 will become plus 1. So minus 1 divided by 1, which is equal to minus 1. Okay. Minus 1 upon 1, which is equal to minus 1. So next. Integration of, that is the primitive of e raised to x. This is equal to integration of 1 upon e raised to x plus 1 upon e raised to x into dx. So the numerator is e raised to x divided by denominator is e raised to x the whole square plus 1. Put e raised to x equal to t. E raised to x को t put कर दो, e raised to x into dx equal to dt. तो numerator है गला dt. Numerator कितना है गला dt divided by t square plus 1. This is dx. Okay. So 1 by t square plus 1 will be equal to tan inverse of t plus c. So what tan inverse t is? Equal to tan inverse of t is nothing but your e raised to x. Okay. Now this is minus 1 to 0 e raised to greatest integer of x into dx plus 0 to 1 e raised to greatest integer of x into dx. So anything between minus 1 to 0, the greatest integer becomes minus 1. So e raised to minus 1 into dx minus 1 to 0 plus e raised to 0 into dx, and this is from 0 to 1. 0 to 1. Anything between 0 to 1, the greatest integer will be equal to so e raised to minus 1 is 1 upon e into 1. Integration of 1 will be x between minus 1 to 0. E raised to 0 is 1 into 1 integration x 0 to 1. So this is 1 by e into 0 minus of minus 1 will be plus 1 and plus 1 into 1 minus 0. So this is 1 and this is 1 upon e. 1 upon e plus 1, which is 1 plus e upon e. This is the final answer. Okay. Then write the parametric equation of a line through this and parallel to the vector this. Equation of line is x minus 1 upon 3 equal to y minus of minus 1 is plus 1 upon 1 equal to z minus 2 upon coefficient of k is minus 1, and let this will be equal to r. So x is equal to 3r plus 1 and y is equal to r minus 1, where z is equal to minus r plus 2 are the parametric equations. Okay. So एमती आज हमें 50 अराउंड 50 MCQs सॉल्व कले केते अराउंड 50 MCQs एई टाइप रो MCQ आसीबो. बेसिक कांसेप्ट को सब मन रखिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करियो चेष्टा करियो, नथिले 50 टा MCQ सॉल्व करला आपनकर टाइम कम पड़ी पारे. देयर विल बी मस्ट लेस टाइम गिवन. देन 3 मार्कर क्वेश्चन अच्छी 5 मार्कर क्वेश्चन अच्छी सेटा भीतर टाइम लागो. एटा 50 टा MCQ करबा मते टाइम लागो. सेतमे जल्दी जल्दी सॉल्व करियो चेष्टा करियो. जेते MCQ प्रैक्टिस करियो मो सहित सेते भलो. हां आ जदि मो चैनल नो आछन मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, सो दैट यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. चैनल नो आथले चैनल रो सब ओडिसा रो प्लेलिस्ट को जाई देखिबे. CHSE बोर्ड रो ईच चैप्टर रो हम 4 वीडियो बनेछु. ईच वीडियो कंटेन्स 3 1 मार्क क्वेश्चन, गोटे 4 मार्क गोटे 6 मार्क्स क्वेश्चन या 3 या 5 मार्क क्वेश्चन आपन कहि पारंती ए वर्षर पैटर्न हिसाब. ठीक अछि. से 4 वीडियो अछि प्रति चैप्टर. तापर आम 2019 20 21 रो पूरा पेपर सॉल्व करके हम अपलोड करछु. ता सहित हम गोटे MCQ सीरीज अपलोड करछु. दुटी MCQ सीरीज ओनली MCQ सीरीज हम अपलोड करछु. गोटे 2019 20 21 आ गोटे बहुत अराउंड 10 इयर्स रो मोर देन 100 MCQ सीरीज हम अपलोड करछु. ए सब हमरो कृष्णास मैथ्स रे अवेलेबल अछि. आपण जाई के देखि परियो आ भलो भाबरे प्रिपेयर कर परियो. So prepare well for your exam and all the best for your exam from Krishna's and from myself also. So bye bye and take care.